दो, ये हटा दो. Rahul, हाँ. Thank you. Can I start? Yeah. Okay. Good afternoon, everybody. Today is our fourth day of webinar series on constipation, a challenge to cure constipation. Today we have two speakers. First one, Dr. Pradeep Sharma sir from Pune. He is a renowned surgeon, colorectal surgeon from Pune. And second one, Dr. Ghansham Kodwani sir, who is HOD of Nidan at Government Ayurved College, Nagpur. So today, first lecture will be on topic use, misuse and abuse of laxative, and speaker will be Dr. Pradeep Sharma sir. Dr. Pradeep Sharma sir is M.B.B.S. MS, MNAMS, DNB, and he is fellow from Israel, and he is consultant surgeon at Jahangir Hospital and Medical Center Pune, Inandar Multispeciality Hospital Pune, and he is convener of FACRSI Examination Association of Colon and Rectal Surgeon of India. He is ex-vice president and treasurer, academic convener at Accuracy, India. Ex-editorial board techniques in coloproctology, Indian Journal of Surgery, program coordinator and fellowship in coloproctology, MUSH Nashik. He is professor in minimal access surgery, fellowship MUSH Nashik. Ex-professor in surgery, Bharati Vidyapeeth Medical College and Hospital, Pune. His area of interest is GI surgery, laparoscopic surgery, colorectal surgery, endoscopic surgery. And his achievements are 28 publications, 4 chapters, 2 oration, 128 presentation, 2 video books. And he had devised new technique, multiple Z plastic in paleonadal sinus. So I will request Dr. Pradeep Sharma sir to start his lecture. Dr. Pradeep Sharma sir. अरे आलोक. हाँ सर. सर अपने वर्कशॉप में आए, उसका थैंक्स करो हर जगह पे, और अपने को सिखाया है. हाँ, Dr. Pradeep Sharma sir has attended our workshop at Ghataprabha, and he has cooperated lots of time to our association. So on behalf of APA, I am thankful to Dr. Pradeep Sharma sir. Thank you sir. Thank you. Good afternoon, everybody. सर को छोड़कर बाकी सबका म्यूट कर दो. Okay sir, you can start now sir. Yeah, thank you everybody. Good afternoon, and at the onset I would like to thank the APA India to have given me this opportunity to talk to you on this topic of constipation. I am going to talk to you about not much about constipation, because there are many other lectures on constipation which I saw in the program, but I am going to talk more on the use abuse of laxative. If you see the market, there are so many types of laxative available that it's always a question in front of a young surgeon or a young physician as to what laxative he should use. So during this lecture, we will try to see what is the basis of using a particular laxative. As you all know, chronic constipation is one of the very common problem, and all of us have suffered from constipation at some or the other time in our life. And if you open any type of media, it may be paper media, it can be TV, it can be cinema, it can be the social media, you will see so many types of advertisement which are related to laxatives and which are related to constipation. And in fact, if you go abroad and if you visit any supermarket, you will find one full section which is dedicated to all various products which deal with laxative. So all these mean that constipation is a
very common problem which affects the mankind. Now, we have always grown up with this idea from our parents and grandparents that if you want to stay away from the disease, you have to be free from constipation. Okay, and this is the theme of this advertisement by Raju Srivastav, that Pet Safa to Rog Dafa, that if you get freedom from constipation, you would be free from any particular disease. So much so that this same idea of chronic constipation became a theme for one of the very popular movie by the name of Piku, where Amitabh Bachchan he acted the main role or the central role of a old elderly person who is chronically constipated, and he gets so much obsessed with chronic constipation that his whole life revolves around his tummy and nothing else. If you see around the world also, there have been so many famous personalities. You can see over here, you can see Adolf Hitler. You can see over here some Hollywood actors. This was one rapper. And you can see this actor from the very famous English serial Grey's Anatomy. Pete Sampras was the tennis player, and John Kennedy, he was one of the presidents of America. So all these famous personalities also, they suffered from chronic constipation and constipation predominant irritable bowel syndrome. So much is the prevalence of constipation that we should know as to what laxative to use for that particular type of constipation. So constipation is one of the most common gastrointestinal disorder which is encountered in clinical practice, and up to 1/5 of the general population suffers from chronic constipation during their lifetime. So before we go in for what is constipation, let us see what is a normal bowel habit. We have to know what is a normal bowel habit. So the time a newborn is born, in the first week of life, the child passes about 4 to 5 soft and liquid-like stools in a day. And once the child becomes about 3 to 4 months old, he starts passing about just 3 to 4 soft stools per day. And when he grows up to 2 years, this frequency comes to about 2 to 3 soft stools in a day. And once he crosses 2 years, he passes 1 to 2 form stool in a day. And usually for most of us, this frequency remains the same throughout our life. So most of us, we are used to passing 1 to 2 form stools in a day. And this remains throughout our life unless until we have some particular disease. So constipation doesn't only mean that there is an infrequent defecation, but constipation can lead to other problems also. It can lead to vomiting. It can lead to anorexia. The patient doesn't have an appetite to eat, and thereby he goes in for weight loss or chronic malnutrition. And patient can also have nausea. He can have a feeling of satiety, and that is why further the appetite is reduced. And sometimes if the stools are very hard, it itself can lead to rectal bleeding because of chronic fissure formation. Now, diagnosis of chronic constipation is not very difficult. So the diagnostic criteria, they depend on what are called as the Rome 3 criteria. And the Rome 3 criteria, I won't dwell much details about, it's all given in the books, that any patient who has at least 25% of the defecations are associated with straining, with lumpy or hard motion, sense of incomplete evacuation, or if there is a sensation of anorectal obstruction, blockage, or if he has to do some sort of manual maneuvers to facilitate the defecation, all these they fit into the Rome 3 criteria for chronic constipation or chronic constipation predominant IBS. So before we go in for what is a normal stool, one should know something about the Bristol stool chart. So this is the Bristol stool chart, because the patient may not always be able to describe what type of stools he is passing. If you ask any patient that are you constipated, I think 80% or 90% of your patients would say that yes, we are constipated. And then you really don't know how to grade it. So you show them this chart. The Bristol stool chart is given on the net. It's very good. And from this Bristol stool chart, you can
come to know what type of stool the patient is passing. So there is a one type of stool which are very hard lumps like nuts or like hard fruit shells, and these are very hard to pass. So this is a type 1 type of stool. And the extreme end of this, type 7, where the patient passes absolutely watery stool. There are no solid pieces in it. It is an entirely liquid stool. So this is extreme diarrhea. This is extreme constipation. Most of the normal population, or most of the people who claim, or most of the people who are going to have a normal bowel habits, are going to have somewhere in between. They are going to have either type 3 or type 4 or sometimes type 5 stools. So anything that is type 3, type 4, and type 5, that can be considered normal. And type 1 and type 2, they tend toward constipation, and type 6 and type 7 go toward diarrhea. Now, before we go in for laxative, one should know what are the common causes of chronic constipation. The causes could be neurogenic, and among neurogenic, the most common cause is diabetes mellitus. So if you see the patient of diabetes mellitus, most of them are uncontrolled diabetic mellitus, and they have their sugars around 250, 300, and they are carrying on with this sugar for a very long time. So usually we see that the patient visits his physician or a endocrinologist maybe once in a year, and after that he goes on continuing with the same medicine for many, many years without visiting his physician. And though his requirement might rise, he might be taking the same dose of medicine. And when he later on has some symptoms and you investigate, you will find that the sugars are somewhere around 200 and 300 and 400. But then they are not under control. But by that time, the damage is already done. The patient is already gone into autonomic neuropathy. And this autonomic neuropathy, which is associated with a uncontrolled diabetes, one of the very common causes of chronic constipation. Then other types of chronic constipation can be seen in patients who have a constipation predominant irritable bowel syndrome, which is a functional syndrome, something related to the brain and gut axis. Then there are so many drugs. I will just dwell in a moment about this. Then hypothyroidism is another common cause of constipation. And then you have idiopathic constipation, where you investigate the patient, everything turns out to be normal, and ultimately when you do a colonic study, you can classify them into a normal colonic transit constipation, or a slow transit constipation, or a dyssynergic defecation, what is nowadays called as ODS, that is obstructive defecation syndrome. Now, why I'm showing you this, that after diabetes, hypothyroidism is one of the common cause of chronic constipation. All of you know that hypothyroidism is very prevalent. It is very prevalent, especially in middle-aged females. And if you see the symptomatology of hypothyroidism, it is not only insensitivity to cold, or unexplained gain weight, or a dry skin, or thinning of hair, or menstrual loss, or muscle and joint pain, or depression. But one of the most important thing about hypothyroidism is constipation. Okay, so if a middle-aged female who has other symptoms like weight gain, insensitivity to cold, fatigue, muscle joint pain, depression, puffy skin, thinning of hair, and if she has also constipation, I think she's a case of hypothyroidism. So these are all the drugs which are associated with chronic constipation. Various NSAIDs, analgesics are associated with constipation, antihistaminics, antispasmodic, of course, because by reducing the bowel movement, it will cause constipation. Most of the people who are having some sort of psychiatric disorders and are on some sort of antipsychotics or antidepressant, so some sort of psychiatry drugs, they would also have constipation, because most of these drugs are centrally acting. They act on the CNS, and they thereby depress the peristaltic movement of the bowel. Iron supplements, which are commonly given for anemia, are again, they are strong constipating agents. So are aluminum agent, which are present in various types of commercially available antacids. So they are again constipating in nature. And then opiates, if at all they are given for terminal cancer or for intractable pain, they can cause constipation. So the one of the commonest opiate which is used in general practice is tramadol, and tramadol is known to cause constipation. Various antihypertensives, vinca alkaloids are given for cancer patients.
Calcium channel blockers are very commonly used as antihypertensives, and they are also constipating agent. So let us come to what are the indications for laxatives. And the basic indication for laxative would be chronic constipation. Now, this constipation would be of various etiologies. It could be because of old age. The patient could be bedridden because of some condition like dementia or Parkinson's or some other neurological condition. The patient could be unconscious because of a head injury or because of meningitis or because of some other stroke or cerebrovascular accident. Then anorectal problems like hemorrhoids, like fissure, fistula, various types of abscesses. Post-operative patient, because he is bedridden, he is on pain medication, he might be on NSAID, he might be on opiates. So he's again likely to have chronic constipation. So he is another strong indicator of using laxative. Post-MI, any patient who has suffered a stroke, a heart attack, or a stroke, they are always put on prophylactic laxatives, because any sort of straining in these patients could again be detrimental and again could lead to a re-stroke or a re-attack. So that is why laxatives are must in these type of patients. Of course, if a patient has to undergo some sort of bowel surgery, some sort of endoscopy, especially colonoscopy or sigmoidoscopy, some sort of radiological procedure like a barium enema, in that case, all the fecal matter has to be out. So these patients, you have to prepare the bowel by giving them appropriate laxative. Portasystemic encephalopathy is another indication for using laxative, because if the bacteria overgrows in the bowel, it leads to formation of ammonia, and more amount of ammonia would enter the circulation, and this will bypass the liver because the liver is already cirrhotic and not able to work. And this ammonia will now start acting on the brain, and the patient would become comatose. So portasystemic encephalopathy is another strong indicator of using a laxative. And then physiological causes like a small child, pediatric patient who is especially undergoing a weaning, that is shifting from the mother's milk or outside milk to a semi-solid diet or a normal diet. So that's a time where the child is liable to have constipation. Or a pregnant lady, just because of the sheer presence of the fetus in the abdomen, because of the pressure of the fetus on the colon, she might be having constipation. So these are all the various very common reasons for constipation. Now, constipation doesn't only mean use of laxative. It means many other things. It means you have to change the lifestyle of the patient. Many of these patients, they have got a faulty lifestyle. So the lifestyle has to be corrected. So all the chronic disorders like, diabetes and myocardial infarct, heart attack, blood pressure, we all know that they are lifestyle related problem, and so is chronic constipation. So good amount of exercise, regular exercise, adequate amount of hydration. Patient should consume at least 1.5 to 2 liters in a day. India is a very hot country, and especially in the summer when the temperature goes above 43 and 45, especially in central part of India, that's a time when the patient can very rapidly get dehydrated, especially if he's doing some sort of outdoor activities. And these are the people who tend to get constipated. So dietary modification, a lot of fresh vegetables, fruits, milk, adequate amount of water, regular bowel habits, eating habits, exercises, these all are very, very important, and they form an important part of the treatment along with laxative. A good toilet training is again very important. The patient should not be doing what is shown in this picture. Most of us, they go to the toilet, sit on the commode, and then start WhatsApping, seeing the messages and answering them, and go on sitting on the commode for half an hour, 1 hour, 2 hours. And there are some people who nearly spend at least about 4 to 5 hours in the toilet on the commode. Now, this is very detrimental. People have habits of reading newspapers, people have habit of reading books. So you can see one toilet over here where the person who is chronically constipated has built his full library in the toilet. Animals, as you know, the herbivorous animals, you can see over here, the hippo is never constipated. You all know the very fact that they eat a lot of fiber, they eat a lot of grass,
and grass is all fiber. So because their diet is rich in fiber, the animals are hardly constipated. So this is one important lesson we have to learn from the animal kingdom. Now, since there are so many laxatives in the market, we have to understand how the laxative work, because that is going to tell us which laxative to use in which particular condition. So how to know which laxative to use? I think we have to first learn the classification of the laxative. That is how you can classify the laxative. And this classification is basically dependent on the mechanism of action of the laxative, that how the laxative is going to act, and that is going to decide the indication for that particular laxative. So this is the classification of the laxatives. So you have laxatives which are bulk agents, you have laxatives which are emollient, you have laxative which are combination of emollient and stool softener, you have saline laxatives, then you have lubricant laxatives, you have osmotic laxatives, you have only stimulant laxatives, and then you have a type of laxative which is called as prokinetic. Now let us see all of these one by one, because that is going to teach us which particular laxative to use in which particular indication. So coming to the first type of laxative, that is called as bulk laxative. Now bulk laxatives are very commonly available in the market, and the most common bulk laxative which is available in the market is some sort of isabgula husk. So isabgula is a fiber which is of plant origin, and this is available both as a non-commercial form which is available with the grocery shop. That is what is the Lakshmi chap type of isabgol. And then it is also available as the refined form of isabgula husk, which is a micro refined and which is much better palatable. To make it palatable, they add some sort of sweeteners or some sort of effervescence to it that makes it more refined. So this is available with the chemist shop. So it is both as a non-commercial product as well as commercial product. Now these bulk laxative, they are basically, it's a natural fiber. So it's a fiber which is of plant origin. It's a natural fiber. And how does it act? They, when they are taken, they are in a micro refined or a small powder form. So when it is consumed, they go into the intestine, and once they are in the intestine, they absorb the water. So the water or the fluid which is there, which is present in the center of the lumen of the bowel, will be absorbed by this fiber, and this fiber will now start swelling. You all must have seen that whenever we tell a patient to consume the fiber, on his first visit after this after you have prescribed the product, he comes and he tells you, doctor, वो powder जो है हम लेते तो है लेकिन वो मैं पी नहीं सकता. Then you ask him why he is not able to consume it. He says that the moment I put it in water, after some time it becomes a thick jelly like thing and he cannot drink it. So this is a mistake which he is making. So when you prescribe a bulk laxative, you have to tell the patient that he has to put 1 or 2 spoons of powder in a glass of water, or he has to put the powder directly in his mouth and drink it and gulp that powder with fluid. Now what happens is that this fiber immediately starts absorbing the water and starts swelling. So if you keep this powder in water for a longer time, it becomes like a jelly, and then it becomes difficult for the patient to drink it. Okay. So the correct way of using a bulk laxative is to either put it in mouth and gulp it with a glass of water, or secondly, if you're going to put it in water, just to put it in water, shake it once or twice and immediately drink it. So before it starts swelling up and turning into a jelly, the patient should drink it. So what happens is that it goes into the intestine, it absorbs water, and it swells. And once it swells, it distends the intestine. And you must have known in first year, we are taught in physiology what is called as a Frank-Starling's law. Now, what is this Frank-Starling's law? The Frank-Starling's law is applicable to almost all types of effort exercise. You know, it is applicable to smooth muscles. It is applicable to skeletal muscle. You know, if we have to build up our skeletal muscle, what we do is that we go to the gym.
We go to the gym and we start gymming and we start taking weights and we start doing weight training. So when the muscle is put under stretch, the muscle contracts stronger. This is what is called as a Frank-Starling's law. This is applicable to both the smooth muscles and the skeletal muscle. So this bulk laxative, it goes in the intestine, it absorbs water and swells and it stimulates the smooth muscle of the intestine. So the smooth muscle of the intestine now contracts stronger. So this is how the peristaltic waves, which are now generated in the small intestine, they would be much stronger. Okay. And plus also it acts like a jelly, it smoothens up, it adds bulk to the stool, and that is how it functions as a laxative. So the action will happen on the same day, but the action becomes stronger as the day pass. So maybe the first day, if you consume a bulk laxative, the effect would be about 25%. On the next day, it would be about 50%. And after maybe 4 or 5 days, it would be about 80% or 90% of the action would be seen, because the muscle contraction also has to build up. Okay. Now they are of usually plant origin. So the commonest fiber which is used of plant origin is psyllium, or what I already told you as called as isabgula or isabgol. And there are various trade forms or various pharmacological products available of psyllium. Then the second fiber which is available in the market is from the wheat or from the oat. And it is usually available as either biscuit in the biscuit form. You can get various types of digestive or multigrain biscuits, or in a bread form in the form of brown bread or multigrain bread. So whenever you consume the cereals as a whole, along with the cover, that is whole wheat or whole oat, so the covering of that cereal contains the fiber. So that is what is called as a bran. Bran, I think in Marathi or in local language, it is called as konda. Then the third type of fiber which is available in the market is terculia, and by the name of normacol. It's not very popular. Then another type of fiber which is available is agar agar, and this is from a blue algae. That is algae which is a seaweed, or which grows underneath the water. So these are various types of fibers which are available, or the bulk laxatives which are available in the market. Now I told you that they are also non-commercial and commercial. The commercial form would be more refined. It would be micronized, because the fiber as such doesn't have any taste. It is tasteless, and many people have difficulty consuming it. So make it more palatable. So the companies, they add some sort of sugar to it and some sort of effervescence to it. So many of these are either lemon flavored or orange flavored, so that make it more palatable. So these bulk laxatives are basically indicated in all these patients who have chronic constipation or as a prophylaxis. You can use it if a patient has a stoma, and through the stoma, if he's pouring out a lot of liquid stool. So to make the stool more firmer, makes more semi-solid and more solid, you can add fiber to it. It is also indicated in patients with ulcerative colitis, irritable bowel syndrome, especially the diarrhea type of irritable bowel syndrome, where it will help to reduce the amount of the stool, or to make the stool more firmer, or to make it more formed stools. And it can also be used for condition where there is lipid profile is disturbed, like hypercholesterolemia. The bulk laxatives are usually used in a dose of about 20 to 30 gram at one time. So it comes to about 60 grams in a day. That is the maximum amount you can take. And important thing is that the patient should always take water along it. So 1 to 2 glasses of water along with a bulk laxative. This is one very common mistake why the bulk laxatives are not effective. So many times what happens is the patient directly takes only the powder. He doesn't drink any water. And then it is left to whatever fluid is present in the intestine to swell the fiber. So if that amount of fluid in the intestine is not much, then the swelling will not be much and the bulk laxative will not be very effective. So that is why, to make it swell,
you have to tell the patient that he has to have 1 or 2 glasses of water along with it. So they usually take about 12-24 hours for action, and the action becomes stronger by third or fourth day. Now, they are contraindicated if a patient has some sort of hypersensitivity, especially if a patient has some sort of hypersensitivity like a celiac disease or a tropical sprue, where the patient is allergic to the wheat and the wheat products. Okay. Then they are also contraindicated if a patient has some sort of obstruction, either a stricture or a stenosis or a fecal impaction, because you know that the intestine is now going to contract strongly. And if there is a distal obstruction, then this intestine is going to perforate. So for the fear of perforation, we have to see that you don't use it in any patient who has any sort of obstruction, subacute or acute obstruction. Also, it is contraindicated in inflammatory condition like appendicitis, like cholecystitis, because in this inflammatory condition of the bowel, if you give a bulk laxative or any laxative of any sort, the inflammation is going to spread. Okay. So, and the classical, it is also again contraindicated in patient who have slow transit constipation, because in these patients there is some neurological disturbance and the transit of the colon is very slow. So in these patients, if you give a bulk laxative, this patient, they start getting bloated, they get a feeling of bloated because the the fiber cannot go across the colon because of the slow transit. And again, they are contraindicated if a patient has some sort of ulcers or strictures or adhesion. Now, since the patient has to take a lot of water along it, the patient always gets some sense of bloating. And if there is some sort of subacute obstruction, that can be precipitated. Now, they can also affect the absorption of drugs. So try to avoid them, to avoid drugs along with it. So if a patient has to take some drugs and a bulk laxative, there should be at least 2 hours gap in between the two. So he should first take the drug, wait for 2 hours, and after that drug is completely absorbed, then he should take a bulk laxative. They are quite safe during pregnancy because they do not set up any violent peristaltic waves, or they do not affect the uterine contraction. So you not only have natural laxative, but you also have synthetic laxative in the market by the name methyl cellulose. And these methyl cellulose, since it is a synthetic fiber, doesn't undergo any sort of fermentation. So there is less bloating or less gas formation. So this bulk laxative can be used for all those patients who are allergic to psyllium and uh, other vegetable fibers, or patient who have tropical sprue or celiac disease. So again, rest of the things are the same, that you have to have it with adequate amount of water. And again, they are contraindicated if a patient has some sort of obstructive symptoms. Fiber is quite safe during pregnancy. So if a pregnant female requires fiber, they are quite safe. Then there is another synthetic fiber by the name of calcium carbohyl, polycarbohyl. This is very favorite in the West. It's not so easily available because it's quite costly, at least in our part of the country, called by the name of metamucil or benefiber. So this is calcium carbohyl. It is a synthetic fiber. So there is no fermentation again. So there is no bloating. So it is very similar to methyl cellulose. So it is one of the product which is commonly used for constipation predominant IBS. Now we come to the second type of laxative, what are called as stool softeners. Now stool softeners are also called as emollient laxative because they soften the stool. And how they soften the stool? They have a soap-like action. Sabna-sarka action aste tala. So they have a detergent action though. So the moment they go in the intestine, they set up a detergent action. And this detergent action causes a foam action. It produces foam, and this foam will soften up the stool. This foam also covers the lining of the intestine, so it affects the fat and the water absorption. So whatever fat and water is there in the lumen of the intestine will not get absorbed, and that would further increase the liquidity, or that would further increase the liquid nature of the stool. So the commonest emollient laxative available in the market is Docosate by the name of Qsena or Dulcolax.
And usually it's available both in tablet form or enema form. Roughly takes about 6 to hours for the action. Now, it is an important thing what is called as tachyphylaxis. Tachyphylaxis is a phenomena where a body gets used to any particular drug and the body starts requiring increasing doses of that particular drug. So this is a phenomena what is called as tachyphylaxis. So emollient laxative, they have a tachyphylaxis. So periodically, if a patient is regularly taking emollient laxative, we would start requiring increasing doses of the emollient laxative. So that is why these laxative are not very safe on long-term basis. A bulk laxative is safe on long-term basis, but emollient laxative is not safe in long-term basis. Now they can interact with many other drugs because they cause that foam action. So it not only affects the fat and water absorption, but whatever drugs are also taken along with it, they can be their absorption would be affected. So again, you should not be using it with any drug, and they are contraindicated in pregnancy. So this is one thing which you have to keep in mind. And most of the side effects of these laxatives are standard side effects like nausea, like vomiting because the stomach get bloated. They can cause colics because now the peristaltic wave is going to be stronger. So some of these patients, they complain of cramps or colics. And if there are a lot of loose motion, in that case, it could lead to dehydration. It could lead to electrolyte imbalance, especially loss of potassium, and it can lead to hypokalemia. So these side effects are nearly common to most of the laxative. Now there are some combinations also available in the market, like a combination of emollient with stimulant. Okay, so there would be a detergent action also, and at the same time something to stimulate the intestine. And the commonest combination is by the name of Qsena. So where there is presence of Dacacet along with Sena. Sena is one another drug which is a stimulant laxative. It is a casenthrol, and it stimulates the peristaltic waves into the small intestine. So you can also have combinations of laxative of this sort. Now, the next category of laxative is what are called as saline laxative. Now, these saline laxatives are basically salts. They are basically magnesium salts, so some sort of magnesium sulfate or magnesium citrate or milk of magnesia. So how they act? They cause osmotic retention of water. So since they are salt, a salt, as you know, that when you put salt in the water gets attracted toward the salt, and the salt dissolves in it. So they cause an osmotic retention of water. So that is why they can be used in acute constipation, but see to it that the patient doesn't have any sort of obstruction. So any obstruction is a contraindication for use of laxative. They take roughly about 3 hours for action because that's the time it requires to reach up to the small intestine. And if it is delivered rectally, it acts within 15 or 20 minutes. And sorry, they are again quite safe in pregnancy because they are not absorbed at all. Since they are not absorbed at all, they only act by osmosis. So that is why they are quite safe in pregnancy also. So the next type of laxative is what is called as a lubricant laxative. So we have seen bulk laxative, then we saw emollient laxative, and now we are seeing the lubricant laxative. Now lubricant laxative, they act by lubrication. Lubrication means like a whatever, like a vangan or like a lubrication which is present in any moving part of an engine. So like you put grease or you put oil in engine so that the moving part, they have less amount of friction. So this lubricant, the commonest lubricant laxative which is available in the market is made up of mineral oil available by the name of liquid paraffin. Now liquid paraffin is a petroleum hydrocarbon. It is, if you see, it is an inert viscous liquid. How does it act? It doesn't get absorbed at all. Okay, it doesn't get absorbed, or it gets absorbed to a very small tune. So that is why it remains in the intestine, and since it's oil based, it covers the intestine. It prevents absorption of water. So the water which is there in the lumen of the intestine remains within the lumen, and that keeps the stool liquid like. It lubricates it. Okay, so
So this is how is the mechanism of action of lubricant laxative. So these are again indicated in acute and subacute constipation, and especially they are very valuable in painful post-operative cases, like if you have operated a case of hemorrhoids or a fissure or a fistula, to take care of the constipation in the post-operative part. This is one of the commonest agent which is used, and it is usually used in about 15 to 45 ml bedtime. It can also be used as an enema also. Now, the main problem with liquid paraffin is that because it's a petroleum compound, it doesn't have any taste, or it has a very unpleasant taste. It's a very oily like thing. So many people do not like the taste of it, and some people they feel nauseated with the with taking this type of laxative. Some people might have hypersensitivity. Now, if a patient is not very conscious, then in that case, the patient is prone to aspiration. So people who are on liquid paraffin and not very conscious, like patient who are terminally ill, patient who have Parkinson, neurological problem, dementia, stroke, etc. So these patients are prone to aspiration. So these patients should be avoided liquid paraffin. And since it causes coating in the intestine, it will affect the absorption of fat soluble vitamins and various types of drugs. So it should not be combined with that. And the commonest complication which is seen with liquid paraffin, as I told you, one is lipoid pneumonia because of aspiration. And second, if you give it on long-term basis, it can be absorbed into the wall of the intestine and it sets up paraffin granulomas. Okay. Now, paraffin is not absorbed, so it leaks out, and many times it leaks out, keeps the perineum wet, and leads to perineal itching. Then the next type of laxative, osmotic laxative. Now, osmosis means it not only keeps the water, but it absorbs the water from the surrounding. Okay, we saw that saline laxative or the bulk laxative, they absorb the water. In the same way, the osmotic laxative, because they have a hyperosmolarity, that's why they absorb the water from the surrounding, from the wall of the intestine. So these osmotic laxatives, the commonly used one is a poorly absorbed disaccharide, which is a combination of fructose and galactose. So the commonest available solution which is used is lactulose, and second one is lactitol. Now this lactulose is a combination of fructose and galactose. Both these sugars, the human intestine doesn't have an enzyme to digest these sugars. So both these sugars are not digested in the human intestine at all. Now many times these solutions are very sweet, or almost all these solutions are very sweet because ultimately they are made up of sugar. But they can be safely given in diabetic patient because this sugar is not absorbed and not metabolized in the human intestine. So that is why you can tell your patient that sometimes the patient will complain, oh doctor, I am diabetic and you have given me a sweet solution. So you tell him that your sugars is not going to rise with this sweet solution. So how does it act? Again, it binds to the water, it distends the colon, it draws the water from the surrounding wall of the intestine. Being a sugar, it undergoes fermentation. Okay, the bacteria which is present in the colon will act on the sugar, and that will lead to release of gases like hydrogen, like methane, carbon dioxide. So it will undergo fermentation. So that is why many of these patients, they complain of bloating because the gas is produced inside. This gas is not one which he has swallowed, but this is something, a gas which is produced inside his abdomen. And this, hello. And this agent is very commonly used in patient with hepatic encephalopathy, because there we want to keep the pH, maintain the pH of the patient so that the bacteria doesn't overgrow. So lactulose is one of the commonest agent which is used in hepatic encephalopathy. The other types of osmotic laxatives which are available are sorbitol, mannitol. Mannitol was very common in olden days, but with the advent of lactulose, it has now gone in disrepute. Polyethylene glycol is another one compound which is commonly used. It's commonly used osmotic laxative, and it's available by the name of Peglite or Pegclear or Exelite, which is commonly used to prepare a patient for colonoscopy. So these
osmotic laxative, if they are given in a small dose, they act as laxative. If they are given in a larger dose, they can be used for bowel washes and for bowel preps. So for preparing for colonoscopy, preparing for radiological procedures. So it is basically a dose dependent compound. Okay. Then the next type of laxative are prokinetic, and two common compounds which are very popular in practices. One is tegaserod and one is prucalopride. So these prokinetic means they are stimulant. They stimulate the intestine so as to increase the movement, peristaltic movement of the intestine. So they cause what is called as an intestinal hurry or a colonic hurry. So they are peripherally acting also and centrally acting also. They act on the receptors which are present in the wall of the intestine, and they act on the receptor which are present in the CNS, and that is how they act. So they are again given, very popularly given in constipation predominant IBS. And again, the side effects and the contraindication are going to be the same. That is, you have to avoid giving it any patient who has subacute type of obstruction. Then the last type of laxative are what are called as stimulant laxative. The name itself suggests that they stimulate the peristaltic waves. Okay, they stimulate, they irritate the intestine, or they irritate the neuromuscular junction present in the wall of the intestine, and thereby the peristaltic wave or the contraction wave which is produced in the intestine is much stronger. And the type of stimulant laxative available in the market are bisacodyl, you have sodium picosulfate, you have cascara, you have aloe vera, alomax. So these are various types of stimulant laxative which are available in the market. And the most popular ones which are used is Senna, then bisacodyl and picosulfate. Danthron was again very popular in olden days, but it was found to be carcinogenic, so it has been now stopped. Phenolphthalein, which was present in the pink cremaphene, which was available about 10 or 15 years back. So earlier we had two types of cremaphene available, the white one and the pink one, and the pink one used to contain phenolphthalein. But this phenolphthalein, because if it is being a nephrotoxic compound, it has been withdrawn by the FDA, and now you don't get it at all. So this has been banned. So the only 3 or 4 one which are available are Senna, bisacodyl, and picosulfate. Yeah. Excuse me, Sharma sir. And again, the side effects are going to be the same, but only one side effect you have to remember is that if it is given for a long time, it causes a blackening of the mucosa of the intestine, what is called as melanosis coli. So melanosis coli. So this is a very important endoscopic feature. So if this patient undergoes colonoscopy later on, you will find that the whole of the mucosa is quite black in color or dark in color. So that is what is called as melanosis coli. And if you see that, you can safely assume that this patient has taken a stimulant laxative for a very, very long time. Another stimulant laxative which is available in the market is castor oil, Arundel tail, okay, which is commonly called as Arundel tail. So how does it act? There is an enzyme lipase which is present in the intestine. So the lipase converts the castor oil into glycerol and ricinoleic acid, and the glycerol will get absorbed into the water, and the ricinoleic acid is the one which stimulates the small intestine, and it also decreases the water absorption from the intestine. So this is how it acts. And again, the problem are the same, that it can cause a cathartic bowel, that if a patient start consuming it on long-term basis, the intestine becomes weaker and weaker, and over a period of time he will develop what is called as a cathartic bowel or a very slow transit constipation. It can affect the various types of nutrition absorption, because it forms a coating along the lining of the intestine. So all the vitamins and nutrients which are present, they are not absorbed properly, and over a period of time the patient starts showing these various types of deficiencies. And again, castor oil is quite unpalatable. It has a very unpalatable taste, and many people, they get nauseated or they have vomiting after this. Now, Sharma sir, one of excuse me. the, I think I'll have some just 2 minutes more. Yeah, okay, thank you, And sir. I will be finishing my presentation.
So the last one important thing is laxative in pregnancy. You know that pregnancy is one physiological condition where the patient can get very much constipated. And this constipation is multifactorial. It could be because of the effect of the hormone, that is the progesterone. Progesterone by itself is a smooth muscle relaxant. And this progesterone, it acts not only on the uterus and relaxes the uterus to accommodate for the baby, but this also acts on the small bowel, and it reduces the motility of the small bowel. So constipation is very common during pregnancy. And second is the pressure of the fetus, or to accommodate the fetus in the pelvis, that itself compresses on the colon, that compresses on the intestine, so the bowel movements are reduced. Then many times a pregnant lady, her fiber intake is less, she is having nausea, she is having low appetite, she is tense, she is psychologically under pressure. So all these things, constipation is a multifactorial thing in pregnancy. So if at all the patient is constipated in pregnancy, first thing is that if possible, try to avoid it. Try to tell the patient to have dietary modification, adequate amount of fiber, some light exercises within the house, adequate amount of water. And in spite of that, if a patient requires some agent, the fiber and the bulk laxatives are quite safe in almost all trimesters of pregnancy. So you can give the bulk laxative or the fibers in any trimester of pregnancy. The lactulose, sorbitol, and Sena are also quite safe. Uh, Polyethylene glycol is to be avoided because presently we do not have any FDA approval for the use of this compound in pregnancy. Castor oil is a big no-no. You should not be using castor oil at all because it's a strong irritant, and sometimes it can cause strong uterine contraction. The patient can have abortion. The newer drug like tegaseroid, misoprostol, etc., we don't know the long-term effects of that, so they are to be avoided. Magnesium and phosphates are also to be avoided because of bad effects on the kidney and on the fetus. Okay, so having said that, having seen various types of laxative like the bulk laxative, you have emollient laxatives, you have stimulant laxative, then you have osmotic laxative, you have saline laxative. Okay, various types of laxative. Now you have so much of choice that you can always choose the correct type of laxative for that particular indication. So just to summarize, in the end, I would just last few slides. The treatment of constipation, you have to investigate properly by history, by investigation, because a constipation can be anything. It can be a simple cause or it can be a sinister cause. So it can be a simple cause just like a irritable bowel syndrome, or it can be a sinister thing like a malignancy. Okay, so always treat the basic cause. A fissure is a very common cause of constipation. So fissure can be effect of the constipation also, and fissure can be a cause of constipation also. So sometimes the fissure is associated with so much of excruciating pain at the act of defecation that the patient is afraid of going to the act of defecation. So he's afraid of going to the toilet and he avoids going to the toilet, and that itself lead to hard stool, hardening of the stool because of desiccation. So a fissure can be a cause of uh, constipation, or it can be an effect of constipation. So dietary correction, adequate amount of fluid intake, exercise, so all these lifestyle modification, good bowel training, avoid sitting in the on the commode with your mobile or with a newspaper or with the books. Laxative abuse is one of the most common abuse. This is something which you have to keep in mind. So never prescribe any sort of laxative on long-term basis. The moment that particular indication is over, the laxative should be stopped. And most of the time, try to taper off the laxative. Don't stop it immediately. If you stop it immediately, there would be a rebound constipation. So that is why you have to taper off the laxative. And many of these patients have some sort of um, uh, they have a background sort of psychiatric problem or a functional problem. They have some depression, anxiety disorder. So proper psychiatric assessment is also very important. So good history, drugs like psychiatric opiates, we have seen so many drugs which are very commonly used in day-to-day practice. They can cause constipation. Medical causes like hypothyroidism, diabetes mellitus, chronic renal failure, they are also to be kept in mind.
whenever a patient comes with constipation. Now, you have to always remember the medico-legal aspects of constipation is if you fail to identify an underlying colorectal cancer. I told you that constipation can be because of a simple cause, it can be because of a sinister cause. And colorectal cancer is something which is sinister. So if you don't investigate the patient, and if after 1 year or 2 years he comes with an advanced colon, I think that's not justified. So failure to identify an underlying colorectal cancer, overlooking an anal fissure in a constipated child. So a child might complain of constipation, but he cannot give proper history. Examine him well, he might be having an anal fissure, which might be leading to a chronic constipation. Misdiagnosing colonic ileus secondary to sepsis or intra-abdominal catastrophe and labeling it as constipation is another medico-legal pitfall. Misdiagnosing a large bowel obstruction as constipation and doing a surgical intervention for constipation in a patient who has an underlying psychiatric disorder. So these are some medico-legal pitfalls you have to keep in mind. There are many other novel drugs which are emerging on the horizon, and so many drugs are coming up in the market about chronic constipation. I think with that, I come to the end of my lecture, and I thank you very much. And if there are any question, I would be happy to answer them right now, because I won't be able to stay back for the till the end of the session, because today we have our national conference going on, and I have a session over there. We have our ASICON going on, the virtual ASICON going on, and immediately after this lecture, I have to join the session over there. So if there are any questions, I'll be most happy to answer that. And again, thanks a lot for everybody for a very patient hearing. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you very much. Very nice presentation, sir, and very informative presentation you have delivered on use, misuse, and abuse of laxatives. So thank you, sir. Is there any question, Rahul, in chat box? Dr. Alok, I think we will not be able to take the questions because already we are running short of time. The another speaker is waiting, and yes, sir. Better if we skip. Okay, sir. Okay, sir. No problem. Thank you, Dr. Pradeep Sharma, sir. Thank you very much. Thank you very much. On behalf of APA, sir, I am thankful to you. Okay, sir. Thank you. Thank you. Okay, sir. Thank you. And next speaker is Dr. Ghansham Kodwani, sir. And topic is Malastamba, Ayurvedic Nidan Panchak and Vyachcheda. So Dr. Ghansham Kodwani, sir, is from Nagpur. He has received Best Teacher Award in 2008 by Directorate of Ayurveda, Maharashtra State, Mumbai. Also recipient of Sri Dhanvantari Puraskar 2013 by Arogya Bharati, Nagpur. Also recipient of Sri Dhanvantari Puraskar 2014 by Sri Baidyanath Pratishthan, Nagpur. Also recipient of Panchakarma Puraskar 2015 by Sri Khadiwale Pratishthan, Pune. Best Ayurveda Teacher Award Maha Ayush Kamal Puraskar 2017. Membership in ex-member Scientific Advisory Board MRCM. Second, ex-member of BOS Banaras Hindu University Varanasi, and Secretary Institutional Ethics Committee GAC Nagpur. So I will welcome to Dr. Kodwani sir, and I will request Dr. Kodwani sir to start his lecture. Good evening, everybody. Good evening, sir. Yeah. There's a very frustrated Slideshow. पीछे चला गया. Good evening, everybody, sir. Hello, sir. I am audible, sir? Yes, sir. Yes, sir. Loud and clear. Sir, मेरा जो विषय दिया गया है मलावष्टम्ब, ये विषय दिया गया है. आयुर्वेदिक संहिताओं में यदि हम इसका विचार करें
तो मलावष्टंभ ये एक व्याधि के रूप में कहीं आपको वर्णन नहीं मिलेगा। मलावष्टंभ अनेक अवस्थाओं में मिलेगा। आपको किसी व्याधि का लक्षण मिलेगा, किसी व्याधि का पूर्व रूप मिलेगा, किसी व्याधि का उपद्रव मिलेगा, लेकिन स्वतंत्र ऐसा मलावष्टंभ व्याधि का वर्णन कहीं नहीं मिलेगा कि जिसके स्वतंत्र हेतु दिए हैं, उसके लक्षण समुच्चय दिया है या उसकी स्वतंत्र बेसिक संप्राप्ति दी गई है, ऐसा आपको नहीं दिखाई देगा। मलावष्टंभ आज की तारीख में आपने जैसे बताया है कि चैलेंज टू क्यूअर है, वैसा मेरा ये कहना है मलावष्टंभ इस चैलेंज टू डायग्नोसिस है। क्योंकि मलावष्टंभ के बारे में हम जो देखते हैं कि समाज में कई लोग मलावष्टंभ को इतना इजीली लेते हैं, कई दिनों तक सेल्फ डायग्नोसिस करते हैं और सेल्फ ट्रीटमेंट लेते रहते हैं, और जब बहुत आगे चली जाती है बात, तब कहीं जाकर के वो फिजिशियन के पास पहुंचते हैं कि मुझे कॉन्स्टिपेशन है, और आपको जो लिस्ट दिखाएंगे भी ये दवा खा चुका हूँ, ये खा चुका हूँ, ये सभी लिस्ट आपको दिखा देंगे। यानी इतना इजीली लिया जाता है, लेकिन वो चैलेंज है एक डायग्नोस करना और उसको क्यूर करना। तो इसके बारे में आयुर्वेदिक संहिता में जो जो जानकारी उपलब्ध है उसका मैं आपको आज विवेचन देने वाला हूँ। सबसे पहले मैं इसकी डेफिनेशंस के बारे में बताऊंगा कि मलावष्टंभ से संबंधित कौन कौन से शब्द आयुर्वेदिक संहिताओं में आए हुए हैं। सबसे पहले एक शब्द आया है विबंध, चरक सूत्र स्थान का है, सुश्रुत तंत्र में भी ये शब्द आया है विबंध, अप्रवृत्ति, अर्थात पुरुष की प्रवृत्ति न होना, मल की प्रवृत्ति न होना, ऐसा एक शब्द प्रयोग हुआ है। दूसरा शब्द प्रयोग हुआ है मल संशय, मलस्य स्वमानात अपेक्षय, अर्थात मल का एक प्रमाण बताया है। पुरुष का अपने ग्रंथ में, आयुर्वेदिक ग्रंथों में बताया कि एक प्रमाण, सप्त अंजलि का प्रमाण रहता है। आज हम उसको क्लिनिकली या प्रैक्टिकली उसको नहीं कर सकते मेजरमेंट, बट जितने प्रमाण में आहार सेवन किया जाता है उस प्रमाण में हर व्यक्ति का, पुरुष का प्रमाण अलग अलग रहता है, रह सकता है, पर उसका प्रमाण से कम होना, उसकी जो मात्रा बताई है पुरुष की, उस प्रमाण से पुरुष कम मात्रा में शरीर के बाहर जाना, उससे कम प्रमाण में शरीर के बाहर फेंका जाना मलावष्टंभ के अंतर्गत आता है। तीसरा एक शब्द आया है मलोपघात, मलस्य उपघातो नाम नाश, अर्थात मल का नाश होना, अर्थात मल की उत्पत्ति ही नहीं होना, पुरुष की उत्पत्ति नहीं होना। ये दो तीन कंडीशंस में होगा। जैसे हमारे पास कई पेशेंट आते हैं कि मुझे मल प्रवृत्ति नहीं होती, पुरुष प्रवृत्ति नहीं होती है, 2-2 दिन नहीं होती, 4 दिन नहीं होती है, और जब हम हिस्ट्री लेते हैं तो आपको हिस्ट्री में मिलेगा कि 4 हफ्ते में से 4 दिन उपवास करती है, निर्जला उपवास करती है, एक बार सिर्फ फ्रूट खाते हैं, प्रायः करे फीमेल्स, लेडीज लोग को ये आदत रहती है। अब जब इंटेक ही नहीं रहता, आहार सेवन ही नहीं करते हैं, तो मल की उत्पत्ति कैसी होगी? तो फिर मल की उत्पत्ति नहीं होगी तो अपान वायु का जो कार्य है कि पुरुष को बाहर फेंकने का कार्य, वो होगा कैसे? तो वहां शब्द आया है मल उपघात। ये एक कंडीशन है कि कॉन्स्टिपेशन के लेकर आपके पास रुग्ण आएगा, मुझे मलावष्टंभ है या कॉन्स्टिपेशन है, बट वो मलोपघात रहता है। हिस्ट्री का इंपॉर्टेंस है कि मल की उत्पत्ति हो रही है या उसका इंटेक कितना है, उसके आधार पर ये शब्द का अर्थ हमें अच्छे से समझ में आएगा। उसके बाद एक शब्द रहता है कृष्ण पुरुषत्व, कष्टेन मल प्रवृत्ति। ये कई बार आप लोगों ने 3 दिन से सुन रहे होंगे कि पेनफुल डिफिकेशन, वही शब्द आया है। सकष्ट मल प्रवृत्ति, प्रवाहिका वाले, परिकर्तिका वाले जो रुग्ण रहते हैं उनमें होने वाला ये लक्षण है। कष्टपूर्वक मल प्रवृत्ति या गुद द्वार संकोच जब हो जाता है उस समय होने वाला ये लक्षण है कृष्ण पुरुषत्व। ये भी मलावष्टंभ के अंतर्गत हम लेते हैं। फिर से शब्द एक रिपीट हो रहा है, पुरुषक्षय। आगे का जो शब्द दिया है पुरुषक्षय, अर्थात पुरुष वैषम्यम अवस्था विशेषः मलस्य स्वप्रमाण हानि, अर्थात उसके प्रमाण में से कम मात्रा में मल तैयार होना, उसकी अवस्था विशेष है। अब उसके कई, मैं बोल रहा हूँ उसके कारण है कि इंटेक कम है, ये एक उसका महत्व का कारण है। और
उस कंडीशन के लक्षण क्या रहते हैं? हृदय पार्श्व पीड़ा रहती है, वायु, इसमें क्या होता है, विबंध रहता है, मल प्रवृत्ति कम प्रमाण में तैयार होती है, वो गैसेस फॉर्मेशन ज्यादा होता है, और वायु ऊर्ध्वगमनम दिया है और कुक्षो संचरणम शब्द आया है। इस कंडीशन में रुग्ण को क्या होता है? हृदय पार्श्व में पीड़ा होती है। यही रुग्ण दौड़े भागे आते हैं कि भाई चेस्ट में पेन हो रहा है, छाती में दर्द हो रहा है, तुरंत ईसीजी निकाला जाता है, ईसीजी नॉर्मल आता है, फिर सब तरफ एक शब्द प्रचलित है, नहीं नहीं गैस की वजह से चेस्ट पेन था, यानी प्रचलित शब्द है, नहीं चेस्ट पेन हुआ था लेकिन वो गैस की वजह से हुआ, या घर बैठे बैठे लोग डायग्नोसिस कर लेते हैं, नहीं गैसेस की वजह से मेरी छाती में बहुत दर्द होता है, ये लोगों के मन में बैठा हुआ शब्द है, और इसी चक्कर में कई लोग हृदय रोग के इसमें ये हो जाते हैं, शिकार हो जाते हैं। इसलिए ये क्या लक्षण है? हृदय पार्श्व पीड़ा है, वो सही में कॉन्स्टिपेशन वाला है, उसका निदान होना आवश्यक रहता है। उसके बाद एक शब्द आया है मलक्षय, कोई रिपीट शब्द आ रहा है, मल संक्षय शब्द हुआ था, पुरुष क्षय शब्द हुआ था, लेकिन अष्टांग हृदय में इस शब्द को मलक्षय नाम से दिया है। मलक्षीणत्वम स देह पीड़नो भवति, अर्थात जब मल क्षीण अवस्था में रहता है तो शरीर में वेदना होती है, ये उन्होंने अष्टांग हृदय में बताया है। और एक लास्ट का इंपॉर्टेंट शब्द आया है, अष्टांग हृदय में बताया है कि मल संग, अर्थात मल अवरोध, अर्थात सिर्फ यहाँ टेक्निकल ऑब्स्ट्रक्शन है कि पुरुष की उत्पत्ति हो रही है, पुरुष का निर्माण हो रहा है, लेकिन उसका डिफिकेशन न होने के पीछे कारण लोकल कारण रहेंगे, शायद वहाँ गुद संकोच हो गया होगा, अर्शा अंकुर बड़े हो गए होंगे, ये कारण हो सकते हैं, कई बार न्यूरोजेनिक कारण भी हो सकते हैं मल संग के पीछे। तो ये डेफिनेशंस जो मलावशब्द इस शब्द के अंतर्गत आई हुई है उसका मैंने आपको बताया। इसके बाद नेक्स्ट जो आया है, मैंने थोड़ा बताया है पुरुष के प्राकृत कर्म क्या है। हम बता रहे हैं डिफिकेशन होना चाहिए, पुरुषीय मल है जो शरीर के अनावश्यक भाग रहता है उसको मल संज्ञा आयुर्वेद में दी है। तो फिर भी वो जो मल है पुरुष, उसका इंपॉर्टेंस आयुर्वेद में बताया है, उसके कर्म बताया है, पुरुषम उपस्तंभम वायु अग्नि धारणम च, अर्थात वायु का धारण करता है, अग्नि का धारण करता है। कितना दूर की सोच थी आयुर्वेद के ग्रंथकारों की कि आप लोगों ने सभी को मालूम है कि मलावस्तंभ वाला रुग्ण क्या परेशान रहता है, जब तक वो डिफिकेशन होता नहीं उसे भूख नहीं लगती, भाई भूख नहीं लगी, मुझे मल प्रवृत्ति नहीं हुई, मेरा पेट सही नहीं है, मुझे खाना नहीं खाना है। अर्थात अग्नि का धारण, मल प्रवृत्ति अच्छे से हुई, वो सीधा पेशेंट के शब्द रहते हैं, आज पेट बढ़िया साफ हुआ, मुझे भूख ज्यादा लगी थी, ये पेशेंट हमको बताता है। वही हमारे ग्रंथों में बहुत पहले से बताया है कि पुरुष का कर्म है अग्नि का धारण करना, अग्नि का संदूषण करना, और उपस्तंभ, इस शरीर का धारण भी पुरुष से होता है, यानी ये शरीर में जो बल मिलता है या शरीर का धारण पुरुष से होता है। इसका इंपॉर्टेंस नीचे में मैंने एक श्लोक में बताने की कोशिश की है। वो जो एक श्लोक आया है, शुक्रायतम बलम पुंसा मलायतम तु जीवितम तस्माद अति प्रयत्नेन संरक्षेत मल रेतसी, कि बलवान प्रयत्न पूर्वक शरीर में इस मल का और शुक्र का संरक्षण करना चाहिए, क्योंकि शरीर का जो बल का कारण है, शरीर में जो बल है आपके इसमें, वो शुक्र के कारण बना हुआ रहता है, और ये शरीर में जो जीवन बना हुआ है वो मल के कारण बना रहता है। अर्थात हमें मालूम है कि रुग्ण को यदि 1 दिन 2 दिन 4 दिन 8 दिन मल प्रवृत्ति नहीं हुई तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, उसे खाना कम खाएगा, उधर आत्मान रहेगा, बाकी सब रहेगा, लेकिन उसको नुकसान ज्यादा नहीं होता है। पर यदि किसी रुग्ण को द्रवमल प्रवृत्ति होती है, अतुस्तार होती है, 1 वेग आया, 2 वेग आया, तीसरा वेग आया, चौथे वेग बाद उसमें डिहाइड्रेशन हो जाता है, अर्थात उस पुरुष का प्रयत्न पूर्वक संरक्षण करना चाहिए, ये उन्होंने बहुत पहले से बता के रखा है। उसी तरह नीचे का एक श्लोक और आया है, राजयक्ष्मा से रिलेटेड श्लोक है, राजयक्ष्मा व्याधि में आया हुआ श्लोक है, तस्मात् पुरुषम संरक्षण विशेषात राजयक्ष्मीणा सर्वधातु शयार्तस्य बलम तस्य ही विडबलम, अर्थात राजयक्ष्मा के रुग्ण का सर्वधातु शरीर में सर्वधातुओं का क्षय हो गया रहता है, अर्थात उसके शरीर का जो कुछ भी बल बाकी बना हुआ रहता है वो धातु के कारण नहीं है, उसका बल जो टिका हुआ है
वो उसके पुरुष के कारण टिका हुआ रहता है, उसके मल के कारण टिका हुआ है, इसलिए उसके मल का संरक्षण करना चाहिए। इसलिए हमें जब भी पढ़ाया जाता है तो राजक्षमा के रुग्ण को विरेचन नहीं देना चाहिए, ये हमारा सिद्धांत है, क्योंकि उसके शरीर में जो कुछ बल बना हुआ है विड़ बल बाकी है, पुरुष का बल बाकी है। ये पुरुष का इंपॉर्टेंस आयुर्वेद में बहुत पहले से बताया है, और यही पुरुष शरीर का उपस्तंभ का कारण है, शरीर में अग्नि का संदूषण का कारण है, और यही शरीर के जीवन का कारण है। और नीचे मैंने एक बताया कि उसका सप्तांजलि प्रमाण दिया है, पर प्रैक्टिकली ये हम आज नहीं कर पाते हैं। उसके बाद अभी यदि मलावष्टम्भ को हम व्याधि माने तो किस स्रोत से रिलेटेड रहेगा? निश्चित पुरुषवाह स्रोत का ही उल्लेख आना चाहिए, इसलिए मैंने इस स्लाइड में आपको उसके मूल स्थानों का उल्लेख बता रहा हूँ। पुरुषवाह नाम स्रोतम पक्वाशय मूलम स्थूल गुदम च। ये जो मूल स्थान की कल्पना है आयुर्वेद में, ये स्थान जो बताया ये अभिव्यक्ति के स्थान है। यदि किसी व्यक्ति को पुरुष की संवेदना है, पुरुष का त्याग करना है, डिफिकेशन हो जाना है, तो सेंसेशन जिस स्थान पर आता है वो उसके मूल स्थान है, पक्वाशय और स्थूल गुद। ये इन स्थानों पर उसे डिफिकेशन का सेंसेशन आता है, इसलिए वो उसके मूल स्थान है। और उसके जो दुष्ट अगर मूल स्थान है, फिर आयुर्वेद का जो सिद्धांत है उसमें उस स्रोतस को दुष्ट होने के कारण बताया है। अब उसमें का जो महत्व का कारण जैसे बताया, संधारणात्, अध्यशनात्, अजीर्ण, अध्यशनात् वर्चोवाहिनी दुष्यन्ति दुर्बला अग्नि कृशस्य च। इसमें सबसे महत्व का कारण रहता है संधारणात्। आयुर्वेद का जो सिद्धांत है, अधारणीय वेगों को धारण नहीं करना चाहिए। वो 13 प्रकार के अधारणीय वेगों में एक है पुरुष वेग। और किसी भी कारणवश, वो कई कारण हो सकते हैं कि पुरुष वेग का धारण करता है और यही आदत उसकी सतत बनी रही तो उसका पुरुषवाह स्रोतस विकृत होता है। अजीर्ण, अजीर्ण अर्थात खाए हुए आहार का पाचन न होना। अजीर्ण का वर्णन करते समय आयुर्वेद में 6 प्रकार के अजीर्ण है, उसमें एक है विष्ठब्धा अजीर्ण, अर्थात जब उसको विबंध रहता है तब उसके अग्नि का संदूषण नहीं होता है और उसके खाए हुए आहार का पाचन नहीं होता है और उसे अजीर्ण हो जाता है, उस कंडीशन का नाम है विष्ठब्ध अजीर्ण। तो ये इसी से पुरुषवाह स्रोत विकृत रहता है। फिर उन्होंने बताया दुर्बल अग्नि, अर्थात जिसकी अग्नि दुर्बल है, खाए हुए आहार का पाचन नहीं होगा, फिर से उसको विबंध हो जाएगा, पुरुष उत्पत्ति नहीं होगी, तो फिर वो उससे स्रोत दुष्ट होता है। और पुरुषस्य, आप लोगों ने कई बार देखा होगा, पुरुष व्यक्ति और मलावष्टम्भ का संबंध मिलेगा, या तो उसको मलावष्टम्भ की वजह से, अभी इसके पहले जो वक्ता थे उन्होंने बताया कि वीकनेस आ जाता है, दौर्बल्य आ जाता है। तो ये जो पुरुषस्य है, या तो उसकी पुरुष प्रवृत्ति नियमित हुई तो पुरुषता नहीं होगी, विबंध रहा तो पुरुषता आती है, और यदि वो पुरुष रहा तो उसमें मलावष्टम्भ ये लक्षण तैयार हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है। इसलिए इन व्यक्तियों में, पुरुष व्यक्तियों में पुरुषवाह स्रोतस विकृत रहता है, विकृत होता है, ये कारण है उसका। और उसके पुरुषवाह स्रोतस यदि दुष्ट हुआ तो शरीर में क्या क्या लक्षण, उस रुग्ण में कौन कौन से लक्षण उत्पन्न होते हैं, इसका वर्णन करते समय होता है कृच्छ्रेण, अर्थात कष्टपूर्वक मल प्रवृत्ति होना। डेफिनेशन में यह आया था कृच्छ्र पुरुषत्वम, सकष्ट मल प्रवृत्ति होना, अल्प अल्प मल प्रवृत्ति होना, थोड़ी थोड़ी मल प्रवृत्ति होना, दिन में 3 बार, सुबह सुबह 4 बार जाना, अल्प अल्प मल प्रवृत्ति होना, सशब्द मल प्रवृत्ति होना, सशूल मल प्रवृत्ति होना, परिकर्तिका का रुग्ण, अर्श का रुग्ण, सशूल मल प्रवृत्ति होना, अति ग्रथित मल प्रवृत्ति होना, कठिन ग्रथित मल प्रवृत्ति होना, इस प्रकार के लक्षण उत्पन्न होते हैं पुरुषवाह स्रोत दृष्टि में। इसीलिए मैंने मलावष्टम्भ अगर मैं व्याधि मानता हूं तो इसकी गणना मैं पुरुषवाह स्रोत के अंतर्गत करना चाहूंगा। नेक्स्ट मैंने निदान, स्वतंत्र हेतु मलावष्टम्भ के पूरे टेक्स्ट में अलग से कहीं नहीं मिलेंगे, कई कंडीशंस है, अवस्था है मलावष्टम्भ। इसके यदि हम निदानों का, हेतुओं का, कारणों का उल्लेख करें तो सबसे पहले मैंने एक अजीर्ण व्याधि का उल्लेख लिया है, मैंने अजीर्ण व्याधि लाया है, और इसमें एक शब्द आया है अजीर्ण व्याधि के कारणों में आया है अत्यंबुपानात्, अधिक जल सेवन करना। आवश्यकता नहीं है फिर भी सुबह उठ के 1 जग पानी पीना, खाना हो गया तो 2 गिलास पानी पीना, डिनर हो गया तो 2 गिलास पानी पीना, शाम हो गई तो
4 गिलास पानी पीना। कारण क्या ने किसी ने तो भी बताया रहता है लोगों को कि पानी पीना शरीर के लिए बहुत अच्छा है, ज्यादा पानी पीने से पेट साफ रहता है, ऐसे लोगों की धारणा बनी हुई है। ठीक है, पेट साफ होता है यहाँ तक ठीक है, बट एकदम ज्यादा जिससे अग्नि मंद हो जाए, और अग्नि मंद हो गई तो उसके आहार का पाचन नहीं होगा, उससे अजीर्ण होगा। उसके बाद शब्द आया विषमासन, आयुर्वेद की एक टर्मिनोलॉजी है विषमासन। खाने का, भोजन का एक निश्चित समय नहीं बंधा हुआ होना, कि एक निश्चित समय पे भाई हमारा लंच आवर 1 to 2, 1 से दोपहर में 1 से 2 के बीच होना चाहिए, पर ऐसा ना होते कभी सुबह 11 बजे लंच लेता है, कभी 2 बजे लंच लेता है, कभी कभी 4 बजे लंच लेता है, इरेगुलरिटी है उसके लंच टाइम में, तो ये सब विषमासन के अंतर्गत आता है। उसके बाद संधारणा शब्द आया है, अर्थात वेगों का धारण करना, उसमें पुरुष वेग अपेक्षित है मुझे, संधारणा। उसके बाद स्वप्न विपर्यश्च, मैंने आगे बताया है। उसके बाद मानसिक कारण आए हैं, ईर्ष्या, भय, क्रोध, परिप्लुतेन, लुब्धेन, रुग दैन्य निपीड़ितेन, प्रद्वेष युक्तेन, ये एक श्लोक। उसके आगे फिर अर्श के हेतुओं का मैंने उल्लेख किया है, जिसमें पुनश्च अति व्यवायात, अति व्यवायात ये एक हेतु माना है, ये इस हेतु से विबंध कॉन्स्टिपेशन होता है, मलावस्तंभ होता है। और दूसरा आया है यान संक्षोभ, एक्सेसिव ट्रैवलिंग, एक्सेसिव ट्रैवलिंग अगर वो करता है तो उसमें कॉन्स्टिपेशन ये कारण, मलावस्तंभ ये उत्पन्न होता ही है। इसको मैं थोड़ा टेबल के आधार पर लिया है। आहार हेतु, जो श्लोक की कुछ बातें थी, आहार हेतु में मुद्ग, जो टेक्स्ट में मुझे शब्द मिला है, मुद्ग, कोद्रव, करीर, चणक आदि भी, वृक्षे संग्राही भी, वृक्ष द्रव्य, हमेशा ज्वारी की रोटी ही खाता है, बाजरी की रोटी ही खाता है, वृक्ष धान्य का अधिक सेवन करता है, आहार में घी का, स्नेह का प्रयोग बिल्कुल ही नहीं करता है। आजकल की फैशन है, घी खाने से वजन बढ़ता है, घी खाने से वजन बढ़ता है, इस आधार पे कई लोग कुछ भी किसी भी प्रमाण में स्नेह शरीर में जाने ही नहीं देते हैं, तो वो वृक्ष के अंतर्गत आ जाता है और जो कॉन्स्टिपेशन का कारण बनता है। कड़ धान्य, बटाने, मांसाहार, द्विदल, इडली, ढोकला, डोसा, मैदे से बने हुए पदार्थ प्रचुर मात्रा में, चाइनीज फूड जो भी मैदे से बना हुआ है उसका यदि अधिक सेवन करेगा तो उसे ये आहार हेतु है जो मलावस्तंभ का कारण बनता है। उसके बाद विहार हेतु आया है, विहार हेतु में रात्रि जागरण। अभी रात्रि जागरण में नाइट ड्यूटी करने वाले लोग जो है, या रात में देर तक जागरण कर रहे हैं और सुबह देर से उठ रहे हैं, देर से देर तक जाग रहे हैं, सुबह देर से उठ रहे हैं। आयुर्वेद में एक सिद्धांत बताया है, ब्राह्मे मुहूर्त उत्तिष्ठा जीर्ण अजीर्ण विनिश्चय, कि सुबह में ब्राह्मी मुहूर्त में उठना चाहिए, ताकि आपने कल खाए हुए आहार का पाचन हो गया है या नहीं हो गया है, ये देखने के लिए ब्राह्मी मुहूर्त में उठना चाहिए। अर्थात ब्राह्मी मुहूर्त का कालावधि क्या बताया, सुबह 5:30 से लेकर 6:30, 6:30, 7:30 बजे तक का जो काल है, या कुछ लोग 5 बजे से 7 बजे तक का कालावधि मानते हैं कि ये ब्राह्मी मुहूर्त है। अर्थात ब्राह्मी मुहूर्त उत्तिष्ठा जीर्ण अजीर्ण विनिश्चयम, आपने कल खाना जो खाया था, कल आपने जो भोजन लिया था, उसका पचन हो गया है या नहीं हो गया है, ये देखने के लिए ब्राह्मी मुहूर्त में उठिए। अर्थात उद्देश्य एक ही है कि उस समय एक रश पेरिस्टाल्सिस डेवलप हुआ रहता है भोजन का पाचन होने के बाद, और एक रश पेरिस्टाल्सिस होकर के डिफिकेशन हो जाता है। अर्थात पुरुष का वेग बना हुआ रहता है ब्राह्मी मुहूर्त में। अगर आप उठ जाते हैं, पुरुष वेग बरोबर हो जाता है, इट मीन्स आपके कल खाए हुए आहार का पाचन हो गया है। और अगर ब्राह्मी मुहूर्त में आप उठने के बाद भी आपको मलवेग नहीं आता है, सेंसेशन नहीं आता है, एक रश पेरिस्टाल्सिस वहां डेवलप नहीं हुआ है, इसका मतलब ये है कि आपने जो कल खाया हुआ आहार है उसका पाचन नहीं हुआ है। तो यही सिद्धांत आयुर्वेद में बताया है कि ब्राह्मी मुहूर्त उत्तिष्ठः जीर्ण अजीर्ण विनिश्चयम। आप खुद निर्णय करिए कि आपका खाया हुआ आहार पाचन हुआ है या नहीं हुआ। इसलिए रात्रि जागरण में क्या होता है, आज की जनरेशन देर से सोती है, सुबह देर से उठती है। अब देर से उठने से क्या होगा, उसका रश पेरिस्टाल्सिस का समय निकल गया रहता है, मलवेग आया रहता है, लेकिन वो सुबह 10 बजे तक सोया हुआ रहता है। अननेसेसरी उस पुरुष में से जल का शोषण होते रहता है
और फिर उसे स्टूल हार्ड होने लगती है, पुरुष वेग आना बंद हो जाता है, फिर बोलता है कि कॉन्स्टिपेशन हो गया, मलावस्तंभ हो गया। इसलिए रात्रि जागरण उसको कारण है मलावस्तंभ का। विषमासन जैसे मैंने बताया, असमय भोजन करना, समय निश्चित नहीं होना, वेगों का धारण करना, ये स्वप्न विपर्य जो नाइट जॉब करते हैं, रात्रि में जागते हैं, दिन में सोते हैं, ये उनको कॉन्स्टिपेशन के कई रुग्ण आते हैं। ये श्लोक में अति व्यवाय वाला शब्द जो आया था और यान संक्षोभ वाला शब्द आया था, ये उसके कारण है मलावस्तंभ के। मानसिक हेतु में बताया है क्रोध, ईर्ष्या, भय, परिप्लोतेन, दीनता और द्वेष। द्वेष कारण बताया है आयुर्वेद में, परिप्लोतन अर्थात अधिक लालची व्यक्ति जो रहता है, ऐसा व्यक्ति जिसके मन में लालच ज्यादा रहती, ऐसे व्यक्ति में भी मलावस्तंभ का कारण रहता है। ये मानसिक हेतु के अंतर्गत श्लोक में वर्णन आया है। उसके बाद निदानार्थक हेतु बताया, कुछ कंडीशंस ऐसी है कि इसमें स्वाभाविक रूप से मलावस्तंभ तैयार हो जाता है। उसमें एक कंडीशन मैंने एज का लिया, वय के अनुसार वृद्धावस्था जो रहती है, वातज अवस्था है। आयुर्वेद में 3 अवस्थाओं का सभी को मालूम है कि बाल्यावस्था, मध्यम तरुणावस्था और वृद्धावस्था। वातज अवस्था है, कफज अवस्था, पित्तज अवस्था और वातज अवस्था रहती है वृद्धावस्था। इस कंडीशन में स्वभावतः शरीर में रुक्षता रहती है, वात का प्रकोप रहता है और उस कंडीशन में मलावस्तंभ रहता है। अपना हमारे पास आने वाले जो मैक्सिमम पेशेंट रहते हैं ना, 50 के उधर वाले रहते हैं और सबसे ज्यादा परेशान मलावस्तंभ से करते हैं। मलावस्तंभ भाई एक बार उनको दवा दिया ठीक हो गया, ऐसा नहीं होगा, हर बार आते रहते हैं ये वृद्धावस्था के रुग्ण। उसके बाद प्रकृतियों का वर्णन है, आयुर्वेद में सप्त प्रकृति बताई है, तो जो वात प्रधान प्रकृति है उस वाले व्यक्ति में मलावस्तंभ अधिक प्रमाण में पुनः पुनः होते रहता है। और कोष्ठ का वर्णन है हमारे आयुर्वेद में, कोष्ठ का वर्णन है, तो वात प्रकृति वालों का क्रूर कोष्ठ रहता है, पित्त प्रकृति वालों का मृदु कोष्ठ रहता है, कफ प्रकृति वालों का मध्यम कोष्ठ रहता है। अर्थात ये मृदु कोष्ठ वालों को अल्प विरेचन, यानी दूध भी अगर 1 कप से ज्यादा ले लिया तो उसको मल प्रवृत्ति ज्यादा हो जाती है। पर ये क्रूर कोष्ठ वालों को जल्दी विरेचन से, औषधि द्रव्यों से कार्य नहीं होता, तीव्र विरेचन औषधियां देना पड़ती है। ये इनका कोष्ठ क्रूर रहता है और इनको मलावस्तंभ का इतिहास बार बार बना रहता है, ये क्रूर कोष्ठी रहते हैं। तो ये कंडीशंस है, ये हेतु है जो हमने समराइज किए ग्रंथ पढ़ने के बाद। उसके बाद एक संप्राप्ति, इसका संदर्भ मुझे नहीं मिला, लेकिन एक संप्राप्ति पुरुष मलावस्तंभ से संबंधित मिली है कि वायु स्वे स्थाने कुपितो बलि अधो वहानि स्त्रोताओं से संवृद्ध अध प्रशोषयन पुरुषम, प्रशोषयम पुरुषम, अर्थात स्वस्थान में प्रकुपित वायु अधर भाग के जो स्रोत है उनको दूषित करता है और दूषित करने के बाद वायु में शुष्कता निर्माण होती है, पुरुष में शुष्कता निर्माण हो जाती है और वो शुष्क पुरुष जिसे कठिन ग्रथित स्वरूप प्राप्त हो जाता है वो संवृद्ध रहता है, अवरुद्ध हो जाता है, अर्थात उस व्यक्ति में मलावस्तंभ उत्पन्न हो जाता है। यही नीचे के श्लोक में है, कोष्ठाश्रिते दुष्टे निग्रहो मूत्र वर्चसो। बीच के कोष्ठ में जो अवरुद्ध पुरुष ये है वायु, प्रकोपित वायु है, मूत्र और पुरुष का अवरोध उत्पन्न करता है। इतनी एक संप्राप्ति ग्रंथ में मुझे मिली है। इसके अलावा कहीं विस्तृत संप्राप्ति का उल्लेख मलावस्तंभ शब्द के अंतर्गत नहीं आया है। उसके बाद लक्षण कौन से हो सकते हैं, यानी उसको हम समराइज कर रहे हैं। तो लक्षणों में जो बताया है कि वात वेण मूत्र संग पूर्वित सुदारुणम तेन तीव्र रुजा कोष्ठ में वेदना होना, पृष्ठ में वेदना होना, हृदय पार्श्व में वेदना होना, आधमान होना, उधर पेट फूलना, आधमान होना, उधर आवेश होना, उल्लास, नौशिया बार बार सुन रहे थे कि नौशिया शब्द रहता है तो ये उल्लास शब्द है। परिकर्तनम, परिकर्तिका होना, परिकर्तम होना, गुदस्थान में चीरे आना, परिकर्तनम, बस्तौ च सुतराम शूलम, बस्ती प्रदेश में वेदना होना, अक्षिगंडक को भाग में शोथ आना, श्वयथु अनयन शोथ आना, पवनस्य ऊर्ध्वगामितम, तथा अगर वही वायु ऊर्ध्वगामी हो गया, प्रकोपित वायु ऊर्ध्वगामी हो गया तो उसे क्या होता है, सर्दी, अरुचि, ज्वर, ये लक्षण निर्माण होते हैं।
इसके अलावा मैंने विषुब्ध अजीर्ण के लक्षण मैंने हाईलाइट करना चाहूंगा, क्योंकि रुग्ण आने के बाद में बताया ना ये डिफिकल्ट रहता है। मलास्तंभ कंडीशन किस कारण से, अजीर्ण से है, उसको उपवास रखने से हो रही है, कि वेगों का धारण कर रहा है उससे हो रही है। तो इन लक्षण, इन कंडीशंस के क्या लक्षण रहते हैं उसका भी उल्लेख मैंने यहाँ श्लोक में किया है। विषुब्ध अवधि में क्या था, विषुब्ध शूलम आत्मानम विविधा वात वेदना मल वात अप्रवृत्तिश्च स्तंभो मोह पीड़नम। इस कंडीशन में मल और अधो वायु की प्रवृत्ति नहीं होती है, ये ऑब्स्ट्रक्ट हो जाती है और रुग्ण को फिर ये आधमान होता है, उदर में शूल होता है, इस प्रकार के लक्षण उत्पन्न होते हैं। उसके बाद पुरुषद उदावर्त, मैंने जो 13 प्रकार के वेगों का धारण नहीं करना चाहिए आयुर्वेद में उल्लेख है, उसमें का पुरुष उदावर्त, पुरुष वेग का धारण करने के बाद जिस रोग का वर्णन किया है वो रोग है पुरुष उदावर्त। अर्थात उस कंडीशन में भी जो रहता है महत्व का लक्षण रहता है संघ पुरुषस्य। पुरुष आप बार बार वेग धारण कर रहे हैं, आपको सेंसेशन आ रहा है, डिफिकेशन को नहीं जा रहा है, तो आगे चल के उस व्यक्ति में पुरुष में अवरोध उत्पन्न हो जाता है, मलावष्टंभ यह लक्षण उत्पन्न हो जाता है। इसके बाद इसके उपद्रव क्या हो सकते हैं, अगर सतत कॉन्स्टिपेशन रहा, बार बार रिपीटेडली उसको मलावष्टंभ रहा, तो उसमें लक्षण इसके उपद्रव क्या हो सकता है। तो महत्व का उपद्रव है परिकर्तिका। आयुर्वेद में ही उसका वर्णन है कि वर्चसो अति विंबंधो अथ स्वे स्थाने परिकृतंती, उस स्थान पे अपने ही स्थान पर स्वे स्थाने परिकृतंती चीरे कर डालता है, ये आयुर्वेद में बहुत पहले से ही बता दिया है। उसके बाद सन्निरुद्ध गुद एक आया है जिसको मैं मानता हूं कि ये कॉन्स्टिपेशन का मलावष्टंभ का उपद्रव है। इसमें वो स्थान का संकोच हो जाता है, गुद स्थान का, गुदोष्ठ का, और फिर लक्षण दिया है कृष्णेण पुरुषम तस्य गच्छति, कष्ट पूर्वक मल प्रवृत्ति होती है, ये उपद्रव है। इसके अलावा एक उपद्रव और है जो है गुदभ्रंश, प्रोलेप्स ऑफ रेक्टम। उसमें क्या बताया कि अतिसार प्रवाहणो अतिसाराभ्याम गुदम गच्छति बहि, कि प्रवाहन ज्यादा करने से या अतिसार होने से गुद अपना स्थान छोड़ करके बाहर आ जाता है, जिसे प्रोलेप्स ऑफ रेक्टम या गुदभ्रंश शब्द आया है। तो हमने जो देखा है प्रैक्टिकली, जो ओपीडी में आते हैं, जो वृद्धावस्था के रुग्ण रहते हैं उनको कॉन्स्टिपेशन के कारण गुदभ्रंश होता है, और जो बाल्यावस्था के रुग्ण रहते, बच्चे रहते, उनको अतिसार या प्रवाहिका के कारण गुदभ्रंश रहता है। और दोनों ही कारण आयुर्वेद में वर्णन किया है कि प्रवाहणो अतिसाराभ्याम गुदम गच्छति बहि। अर्थात ये हम जो बलावष्टंभ है उसका उपद्रव हम गुदभ्रंश भी ले सकते हैं। इसके बाद इसकी चिकित्सा सूत्र, मैं उसके बारे में डिटेल नहीं बोलूंगा, पर चिकित्सा में जो बताया है उन्होंने बताया वर्ती, अभ्यंग, अवगाश्च, स्वेदनम, वस्ति कर्म च, अन्नपानम च, विड़ भेदी, विड़ रोधोत्थेषु यक्ष्मसु। अर्थात वर्ती देना चाहिए, सपोजिटरी जो बनती है वो देना लगाना चाहिए, अभ्यंग कराना चाहिए, अवगाश स्वेद देना चाहिए, स्वेदन करना चाहिए और बस्ती करना। इस व्यक्ति इसके अलावा एक विरेचन द्रव्य जिसका बड़ा उल्लेख होता है, विरेचन द्रव्य आयुर्वेद में बहुत विस्तृत वर्णन है, पर उसके गुणों का वर्णन करते समय कितना सुंदर वर्णन किया है कि विरेचन द्रव्य कैसा रहना चाहिए। विरेचन द्रव्य सुखम शिप्रम महावेगम, सुख दुखम अकुर्वम। अर्थात विरेचन द्रव्य प्रमाण लेने के बाद किसी भी प्रकार की बहुत तीव्र वेग नहीं आना चाहिए, उसे किसी प्रकार का दुख नहीं होना चाहिए, रुग्ण को वेदना नहीं होनी चाहिए, सुख भी बहुत ज्यादा नहीं, गुड फीलिंग बस वहां तक की अपेक्षित है। असक्तम यत् प्रवर्तते, असक्तम इति अप्रतिबद्धम, अर्थात मल प्रवृत्ति रुक रुक करके नहीं होना चाहिए, एक बार में मल प्रवृत्ति होना चाहिए। असक्तम इति अप्रतिबद्धम, बद्ध मल प्रवृत्ति नहीं होना चाहिए। विरेचन द्रव्य दिया तो उसका गुण है कि असक्तम यत् प्रवर्तते, ना अति ग्लानि करम पायो, पायो न च रूप करम। पायो यानी गुदस्थान में ग्लानि या गुदस्थान में वेदना उत्पन्न करने वाला द्रव्य विरेचन द्रव्य नहीं हो सकता है। विरेचन द्रव्य ऐसा होना चाहिए
जिससे गुदस्थान में किसी प्रकार की पीड़ा नहीं होनी चाहिए। और एक शब्द आया अंतराशयम अक्षुण्णम अपीड़नम, अर्थात औषध लेने के बाद, विरेचन द्रव्य लेने के बाद उदर भाग में भी किसी प्रकार की वेदना नहीं होनी चाहिए। कृष्ण दोष निरस्यति, दोषों का निर्हरण करने वाला द्रव्य विरेचन द्रव्य होना चाहिए। यानी ये 6 गुण उस विरेचन द्रव्य में बताया है, ने क्लियर कट बताया है आयुर्वेद में कि विरेचन द्रव्य लेने के बाद उसमें किसी भी प्रकार के ये साइड इफेक्ट्स नहीं रहने चाहिए। ये उसका वैशिष्ट्य है। विरेचन द्रव्य के गुणों का वर्णन करते समय वैशिष्ट्य बताया है कि विदाउट साइड इफेक्ट रहना चाहिए, किसी भी प्रकार की वेदना उदर भाग में, गुद भाग में, मन में ग्लानि या तीव्र वेग आ रहा है या रुक रुक कर वेग आ रहा है, ये लक्षण उस विरेचन द्रव्य में नहीं रहने चाहिए। इसके बाद विरेचन द्रव्यों का यदि हम उल्लेख करें तो 2 प्रकार के विरेचन द्रव्य टेक्स्ट में वर्णन है। 2 प्रकार के विरेचन का वर्णन है, एक सौम्य विरेचन और दूसरा बताया है तीव्र विरेचन। और ये सौम्य विरेचन के भी उन्होंने 2 भेद किए हैं। अनुलोमन, अर्थात अनुलोमन शब्द का मीनिंग अर्थ लिखते समय बताया है यन मलानाम पाकम कृत्वा बंधम च विधवा अथो नयति तद अनुलोमनम नियम, अर्थात मल का पाक करने के बाद उसमें प्रमाण पूर्वक जल का शोषण हो गया नहीं, उसका बंधे हुए स्वरूप में है नहीं, इस स्वरूप में वो शरीर के बाहर मल को निकालता है, ये है अनुलोमन। उदाहरण दिया है हरित की और एरंडा तेल। ये मल का पाक लेने के बाद उस पुरुष का पाक व्यवस्थित हुआ नहीं, उसका स्वरूप बरोबर बना कि नहीं, इस प्रमाण वो इस तरह से उसको शरीर के बाहर निकालता है, वो अनुलोमन द्रव्य। उसके बाद मृदु कोश सौम्य विरेचन में एक शब्द आता है स्त्रौंसन, दूसरा प्रकार है सौम्य विरेचन का है स्त्रौंसन, अर्थात इसका मीनिंग जो दिया है यत् कोष्ठे श्लिष्टम पक्तव्यम मलादिकम अपक्त्वा एव अधो नयति तत् स्त्रौंसनम नेयम, अर्थात कोष्ठ में चिपका हुआ जो मल है, वहां जो चिपक गया है, मलावस्तंभिक कंडीशन है, रुग्ण 2 बार 3 बार जाता है लेकिन पूरी तरह से इवैक्यूएशन नहीं होता है, चिपका हुआ श्लिष्टम पड़ा हुआ मल है, फिर उस मल को पक्व करके या अपक्व करके जैसी भी कंडीशन है उसको शरीर के बाहर निकालता है जो द्रव्य, वो स्त्रौंसन द्रव्य है। यानी शरीर का पुरुष का पाक करेगा ऐसा नहीं, चिपके हुए मल को निकाल वहां से निकाल के शरीर के बाहर फेंकने वाला द्रव्य जो है स्त्रौंसन द्रव्य है। उदाहरण दिया है आरगवत, घृत कुमारी, सना या सोना माखी या सेना जिसको हम बोलते हैं, ये स्त्रौंसन द्रव्य है। इसके बाद तीव्र विरेचन, इसके 2 भेद दिए हैं शारंगधर पूर्व खंड में। अब विरेचन की विरेचन उसका एक भेद है विरेचन यद विपक्वम अपक्वम व मलादि द्रवताम नयेत रेचयति अपि, अर्थात वो सेवन करने के बाद वो पुरुष पक्व अवस्था में है या अपक्व अवस्था में, किसी भी अवस्था में उसमें द्रवता लाता है, उसमें द्रवता लाता है, द्रव स्वरूप में बनाता है और रेचयति एक सम वो शरीर के बाहर निकाल के फेंक देता है, ये द्रव्य है विरेचन द्रव्य। उदाहरण दिया है जयपाल, स्नूही, ये देखते ही नहीं उस कंडीशन में जो पुरुष वहां अवेलेबल है उसको द्रव स्वरूप प्राप्त करा देता है और शरीर के बाहर निकाल देता है, ये है विरेचन द्रव्य। उसके आगे और भेदन द्रव्य दिए हैं यत् बद्ध मलादिकम बद्धम वा मलहे पिंडितम वा भित्वा पातयति तत्, अर्थात मल है कोष्ठ में पुरुष पड़ा हुआ है, वो बद्ध स्वरूप का है, ग्रथित है या पिंड स्वरूप प्राप्त हुआ है, शुष्क मल है, स्टोन फॉर्मेशन हो गया है, इस कंडीशन में पिंडित स्वरूप का मल है, उसका भेदन करता है, कठिन ग्रथित है उसको तोड़ता है, भेदन करता है और भेदन करके शरीर के बाहर निकालता है, वो द्रव्य भेदन द्रव्य है और उसका उदाहरण है कुटकी। ये 4 प्रकार के विरेचन बताया
सौम्य विरेचन के 2 बताए और तीव्र विरेचन के 2 बताए। ये ग्रेडेशंस है। ये हमें डायग्नोसिस करना है कि रुग्ण में मलावस्तंभ का ग्रेडेशन क्या है, इसे सौम्य विरेचन देना है या इसे तीव्र विरेचन देना है, तीव्र विरेचन में भी उसको विरेचन द्रव्य देना है या भेदन द्रव्य देना है। ये वैद्य का कर्म है डिसाइड करना। यानी मलावस्तंभ आपका रुग्ण आने के बाद उसको सौम्य में अनुलोमन में अभयारिष्ट देना है या आरगवत देना है, ये हमें डिसाइड करना है। ये वैद्य का कर्म है, ये ग्रेडेशन है और विरेचन द्रव्यों के भी ग्रेडेशन के आधार पर उसका वर्णन किया है। उसके बाद एक डिफरेंशियल डायग्नोसिस शब्द है, व्यवच्छेदक निदान है। तो मलावस्तंभ के जो रुग्ण आते हैं तो कई बार वो केवल फुगारा शब्द लेकर के आते हैं, पेट में बहुत फूल गया है, गैसेस भर गई है, या जो एडवर्टाइज आती है ना पूरी गैस की आती है, या कई बार तो ये आदमान आटोप शब्द वाले क्या आते हैं कि पेशेंट आपके पास आता है कि मेरे को एसिडिटी हो गई है, हालांकि उसको हाइपर एसिडिटी भी नहीं रहती है, हाइपो एसिडिटी भी नहीं रहती है, उसे मलावस्तंभ रहता है। बट प्रचलन ऐसा है कि एसिडिटी हो गई है और डॉक्टर उसको एंटासिड देना शुरू कर देते हैं, जिससे ये दोनों लक्षण आदमान आटोप फिर से बढ़ जाते हैं। इसलिए वो पेशेंट आने के बाद उसको मलावस्तंभ के बाद आदमान हुआ है या आटोप है, वो उसका निदान करने के बाद उसको औषध देना चाहिए। और यदि दोनों रहे, मलावस्तंभ भी रहता है और वायु ऊर्ध्वगामी भी रहता है, तब उस कंडीशन को अनाह शब्द टेक्स्ट में वर्णन किया है। तो ये हमें निदान करना है, उसको वातानुलोमन वाली हिंगाष्टक वाली दवा देना है, या विरेचन है मलावस्तंभ है तो विरेचन देना है, या अनुलोमन और विरेचन दोनों दे, वातानुलोमन और विरेचन दोनों दवाइयां देनी है। ये हमको व्यवच्छेदक निदान करते समय ये बातें देखना जरूरी है अगर यदि मलावस्तंभ का रुग्ण आता है तो। इसके बाद ठीक है, ये इतना ही। धन्यवाद, आप लोगों ने शांति से मुझे सुना और आयोजकों ने मुझे बोलने के लिए मौका दिया। मेरी रिक्वेस्ट की थी, मेरा वैसे कल के दिन था लेकिन मैं किसी कारणवश कल नहीं कर पाया और उन्होंने मुझे फिर से चांस दिया, इसलिए उनका आयोजकों का तहे दिल से धन्यवाद। इसके अलावा किसी की कोई क्वेरी है तो मुझे पूछ सकते हैं। Thank you very much, sir. Very nice presentation. Very informative presentation you have delivered on Baddha or Malavastamba. Thank you, sir. Is there any question, Rahul, in chat box? No, sir. Yes, sir. No, there is no question. There is no question, sir. So thank you very much. आपने इतना अच्छी तरह बताया कि सारी बातें सबके समझ में आ चुकी, इसलिए किसी के मन में कोई प्रश्न ही नहीं रहा सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। I will request to Dr. Sachin Patil for vote of thanks. 1 minute please, 1 minute please, excuse me. Actually, this webinar series is a plan from APA, and what is the aim behind this webinar series? So I will request to Dr. Sanghvi sir, please express their views about this webinar series. Then we will conduct vote of thanks. Hello. हाँ sir. Yes sir, yes sir. But not clear sir. अभी क्लियर है वॉइस? Yes sir. Now it is. Thank you very much. ठीक है सभी? Yes sir. ओके, थैंक यू वेरी मच। अभी कोई इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन ऐसा है कि ये पूरा सेमिनार आयोजन करने के पीछे मेरी पूरी यंग टीम जो है उनका विचार विमर्श था। आइडिया ये है कि पूरी प्रोक्टोलॉजी का जो अपना कार्यक्रम है, ये हम लोकलाइज स्थानीय चिकित्सा करते हैं। इसकी उत्पत्ति स्थान
कि भेदन जो है हम बहुत कम करते हैं, इसकी संपाती ध्वनि बहुत कम करते हैं. We are more interested in the surgical work. लेकिन ये आइडिया इसलिए है कि भाई हम अगर करते हैं तो अपन मेन समझते ये है कि बहुत सारे कोजिस में से एक कोज ये है कॉन्स्टिपेशन. और कॉन्स्टिपेशन को लेकर बहुत सारी मिथ है अपने वहां पे. तो ज्यादा से ज्यादा आयुर्वेदिक, एलोपैथिक और मॉडर्न नॉलेज और कुछ कुछ ऐसी है कि हम जो है कहाँ सर्जिकल है, कहाँ मेडिसिनल है, कहाँ कौन सा द्रव्य देना, इनके ऊपर जो है हम ये जानना चाहते थे. और मैं तो बहुत संतुष्ट हूँ और बहुत नए लोगों को मुझे सुनना मिला. इसके लिए पूरी आयोजन टीम और एपीए को मैं धन्यवाद करता हूँ. और आप म्यूट हो गए. ये सिर्फ एपिटाइजर था. बहुत सारी कुछ इसमें से अपने को समझने को मिली और भविष्य में भी ऐसे ही हम इसके विस्तार रूप में सहन करके करेंगे और प्रैक्टिस में परिणित करेंगे. तो मुझे ये लगता है कि आयुर्वेद और पेशेंट्स के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी और पेशेंट का रिकरेंस बहुत हो जाएगा. सब आप लोगों ने बहुत बड़ी मेहनत की और मेरी अपेक्षा जिन्होंने भी लाभ लिया वो अपना ओपिनियन लिखे, सजेशन लिखे, ताकि एक और उचित ढंग से, नए ढंग से एंटायर टीम जो है फिर से आपके सामने उपस्थित हो. थैंक यू वेरी मच. Thank you very much. Thank you very much, sir. Now I will request to Dr. Sachin Patil for giving vote of thanks. Thank you, Alok sir. So, yes, thank you, Alok sir. On behalf of APA, I would like to thank Dr. Pradeep Sharma and Kodwani sir. Pradeep Sharma, we have heard him so many times. He is basically a surgeon, and to explain medicines for a surgeon, it's a bit difficult. To explain surgical procedures is a daily routine for him. But Pradeep Sharma sir explained each and every drug, how does it act, right from the beginning. He explained all the basics of treatment of constipation. We are very much thankful to you, Sharma sir. Secondly, Kodwani sir, he is my mentor. I have been learning since so many years from him. I still remember before 20 years also, we never missed his bedside clinic or even OPD. We used to attend each and every word of him. So I was a houseman of Kodwani sir also. I have learned so many things from him. Today, we are privileged to have you, sir, here on the platform of Ayurveda Proctology Association. We are very much thankful to you. Your presentation was excellent. It was knowledgeable and very much helpful to all the attendees. Thank you very much. Over to you, Alok sir. Thank you, Dr. Sachin. Now the session is over and I will conclude the session. So thank you very much. Thanks to all. कौन स्पीकर है, क्या है? हाँ सर, कल कौन स्पीकर है, क्या है, जरा अनाउंसमेंट करो. या तो जिसको मालूम है उसको बोलो. कुणाल को बोलो, कुणाल को. हाँ डॉक्टर कुणाल, please explain tomorrow's guest speaker and topics. Dr. Kunal. So I think Kunal is not there, Alok sir. Okay. Tomorrow we have Dr. Roy Patankar with us. Yes, He is a surgical gastroenterologist from Mumbai, and he will explain each and everything about obstructive defecation syndrome and star surgery. So we will meet again at 4 o'clock tomorrow. That's all from my side. Okay, thank you very much. Thanks to all. The session is over. सर आप म्यूट हो सर. हेलो सर, आप अनम्यूट करिए सर.
Hello. कल रॉय पाटनकर सर है. हाँ सर सचिन ने डिक्लेयर कर दिया सर. Okay, so I think so today's meeting you are over and we are thankful to the Laxatives to sponsor this program. Yes sir. Yes sir. Thank Thank you. you. Thank you Laxatives. Okay sir. Bye. Thank you. Bye sir. મને નથી જોઈતી.